सारा चादिया मैनू तेरे बिना कोई ना सहारा गुरमेल ना मौका दे दिया करे मैनू तेरे ठीक है होना ही है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾ सोन शाकिर पाला प्यारा लाबेया मैनू तेरे बिना कोई ना सहारा लाबिया भजन बोल मैनू तेरे बिना कोई ना सहारा लाबिया अजायब जासा तेरा गाए सच नाम दियाए अजायब जासा तेरा गाए सच नाम दियाए तेरा तकिया सहारा जब सारा चा दिया मैनू तेरे बिना कोई ना सहारा लागिया मैनू बड़ा अमोलक समा उस प्रभु ने सानू दिता है, इंसान का जामा दिता है। ये अमोलक समा बार बार साढ़े हथ नहीं आएगा क्योंकि किसी भी जूनी में प्रभु के नाल मिलाप कर सकन की समर्था नहीं, वो इंसान के जामे च ही है जिहड़ी असी प्रभु प्राप्ति का अवसर सानू दिता जाता है। वो प्रभु जब साढ़े ते मेहर करता है, दया करता है, सानू किसी महात्मा की संगत और सोबत बख्शदा है। संत महात्मा सानू नाम नाल शब्द नाल जोड़ दिंदे है, शब्द नाम साड़ी रखा करता है। असी संतां दी गोद विच रूहानी तरक्की करते हैं। God has given us this priceless time. It is a precious opportunity that we have been given this human body. Not everybody gets this precious opportunity, first of all to get the human birth and then to get the opportunities to do the devotion of Lord. So we are very fortunate ones that God Almighty has blessed us with this precious opportunity of getting the human birth and then being able to do the devotion of Lord. Whenever God Almighty showers His grace upon us, first of all He brings us in the company of the perfect Master who gives us the initiation, and sitting in the lap of that perfect Master we do our spiritual efforts and we do our spiritual journey and we progress towards our real home. And this privilege cannot be had by everyone. We can have this only if God Almighty is gracious upon us. हाँ भाई, अभ्यास तो बैठ तो पहला मैं सदा ही दसदा हुंदा हां कि किस तरह जो साडे अंदर दिन रात दुनिया दे कारोबार दे संकल्प उठ रहे हैं, विकल्प उठ रहे हैं, उन्होंने शांत कर लेना बड़ा जरूरी है। किसी काम नूं भी असी करन लगिए अगर उन्होंने प्यार ना प्रेम ना कराया जाए तो बोझा नहीं लगता। सो सानू भी चाहिए है जो काम सानू सतगुरां ने दिता है, परमात्मा ने मेहर करके दिता है, उसनूं प्यार ना करिए, बोझा समझ के ना करिए। Before we start doing the meditation, I would like to repeat what I have been saying before also, that it is very important for us to forget all the thoughts and fantasies and all the things which were happening in our mind. Before we sit for the meditation, we should keep our mind empty. And whatever work our Sadgurus, our masters have given to us, the work of doing the meditation and remembering them, we should do it wholeheartedly and lovingly. Because if we do any work lovingly, we do not feel it as a burden. So while you sit here doing the meditation, do it lovingly and do not feel it as a burden. हाँ भाई, अखां बंद करो, अपना सिमरन करो, बगैर दुनिया के ख्यालों तो
ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। So all of you please close your eyes and start doing this Simran lovingly. Do not open your eyes. Do not open your eyes and look around yourself. Don't think, don't worry about your friends. Please open your eyes only when we ask you to. Okay, please close your eyes and start meditating. सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। काशी नाए मथुरा नाए, नाए हरिद्वार रे। काशी नाए मथुरा नाए, नाए हरिद्वार रे। चार धाम तीरथ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। वन में जाए कियो तप पारी, काया कष्ट अपार रे। वन में जाए कियो तप पारी, काया कष्ट अपार रे। इंद्री जीत करे वस अपने, हृदय नहीं विचार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे। मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़ो आचार रे। साधु जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे। सत संगत जग सार सारो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। बिन सतसंग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। बिन सतसंग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरो भव जल पार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे। सत संगत जग सार साधो, सत संगत जग सार रे।
ਹਾਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। I am very thankful to my beloved Guru Dev who has showered grace upon us and who has given us the opportunity to do his devotion. It is all due to the grace of the beloved Lord Kripal that we are sitting here in his remembrance. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Mahatmas lovingly tell us that if fortunately we get of a perfect master, we should love the perfect master with all our heart. We should give up the attachment for all the pleasures of the world and the pleasures of the organs of senses. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। We should go within ourselves, taking along the master, and in the within only the perfect master connects our soul inside. ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਟੇ, ਕੁਲਾਈਆਂ, ਗੋਡੇ, ਮੋਢੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। At the time of the initiation, it is explained that how when we sit in the meditation and the withdrawal process starts, how our ankles, our feet, our hands, shoulders, how all those parts of the body become numb. ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We should not pay any attention to all these pains and we should not lose the courage. As we get connected to the Naam, our connection or attachment to the things of the world are broken easily. ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਦ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। We should not lose the courage when by doing the Simran all our consciousness is collected together at the eye center. We should forget about everything of this world because only in the within our beloved master, the perfect master, connects our soul with the Naam. So we should forget about all the attachments and all the things of this world, and the thing for which we are sitting here, that Naam, master gives us, connects us with that Naam in the within. हाँ भाई, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। So all of you please close your eyes and start meditating. गुरु बिन कौन सहाई नरक में, गुरु बिन कौन सहाई रे, गुरु बिन कौन सहाई नरक में, गुरु बिन कौन सहाई रे, गुरु बिन कौन सहाई नरक में, गुरु बिन कौन सहाई रे। मात पिता सुत बंधव नारी, स्वार्थ के सब भाई रे, मात पिता सुत बंधव नारी, स्वार्थ
भारत के सब भाई रे, परमारथ का बंधु जगत में सतगुरु बंद छुड़ाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। भव सागर जल दुस्तर पारी, गर्भ से दुखदाई रे। भव सागर जल दुस्तर भारी, गर्भ से दुखदाई रे। गुरु खेवटिया पार लगा के ज्ञान जहाज बिठाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। जन्म जन्म का मेट अंधेरा, संसार सकल नसाई रे। जन्म जन्म का मेट अंधेरा, संसार सकल नसाई रे। पार ब्रह्म परमेश्वर पूरन घट में दे दिखाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु के बचन धार हृदय में, भाव भक्ति मन लाई रे। गुरु के बचन धार हृदय में, भाव भक्ति मन लाई रे। ब्रह्मानंद करो नित सेवा, मोक्ष पदार्थ पाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे।
हाँ भाई, बड़ा अमोलक समा है, अमृत वेला है। इस वे ताजे ताजे सौंक लिखे हैं। अगर सुर शब्द का अभ्यास किया जाए तो सारी सुर जल्दी ही तीसरे तिल में एकाग्र हो सकती है, शरीर में छड़ सकती है। It is a very precious time. It is the ambrosial hour. You people have just woken up. If at this time we can still our attention at the eye center, it can become very easy for us to go within. जो प्रेमी राजस्थान जाने रहे हैं, मेरा सब दसिया है, हुण भी मैं सब याद करवाना चाहना है कि अभ्यास से बैठने तो पहला अपने 5 पवित्र नावां नूं अच्छी तरह उच्चारण कर लो, ताकि बैठिया मगरों ये ना होवे कि थोड़ा शरीर ही बैठा रहे, वो 5 पवित्र नाम उच्चारण ना हो रहे हों। The dear ones who have been to Rajasthan, they know this very well. As I have often said, anyone here, I will repeat that before you sit for the meditation, you make sure that you remember the 5 sacred words and you pronounce it in your own self, in your within, so that when you sit for the meditation, you may be doing the repetition of those 5 sacred names. You may be doing the Simran. Don't let just your body sit here and your mind wander all over. सब संत महात्मा गुरु नानक कबीर मौलाना रूम समस्त ब्रेज मुहम्मद साहब ने कहा है आपो अपन बाणियां विच कि प्रभु साडे अंदर है, सिर्फ अंदर ख्याल नूं पलटा देण नाल ही असीं उस नाल मिलाप कर सकते हैं। All the saints and Mahatmas like Guru Nanak, Kabir, Maulana Rum, Shamastabre, all the perfect masters who came in the past have said in their own banis, in their own ways, that God Almighty is within us and we only need to invert ourselves, only we need to convert our thoughts and very easily going within we can see. कृष्ण ने भी सानू प्यार नाल समझाया कि मेरे पिता दी परमात्मा दी दरगाह थोड़े अंदर है। Christ also lovingly explained to us that the court of my beloved Lord is within you. तो सानू चाहिए है कि बाहरों ख्याल नहीं हटाइए, अंदर नाम ना जुड़िए, अपना सिमरन लगातार करिए। So we should withdraw our attention from the outside and we should connect ourselves with the Naam within. Okay, all of you please close your eyes and start meditating. गुरु बिन कौन मिटावे दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे, गुरु बिन कौन मिटावे दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गहरी नदिया वेग बड़ो है, बहत जीव सब जावे रे, गहरी नदिया वेग बड़ो है, बहत जीव सब जावे रे।
कर कृपा गुरु पकड़ भुजा से खींच तीर पर लावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे। काम क्रोध मद लोभ चोर मिल लूट लूट कर खावे रे। काम क्रोध मद लोभ चोर मिल लूट लूट कर खावे रे। ज्ञान खड़ग दे कर कर माही सबको मार भगावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। जाना दूर रा
हाँ भाई, बड़ा अमोलक समा है। जो काम ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। It's a very priceless time. The work which we cannot do in any other body, in the bodies of the animals and the birds, and which we can do in the human birth, is the devotion of Almighty Lord. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੰਜ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕੇ ਪੰਛੀ ਹਵਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। Mahatmas have always told us that the devotion of Almighty Lord is a priceless wealth, it is a precious gem, and we can get it only by doing the meditation of Naam. It is the medicine of removing the lust, anger, greed, attachment and egoism, these five passions which are making all the souls dance like the monkey dances to their tune. The only way to remove these passions is the devotion of Naam. They have always said
that the devotion of Naam, the meditation of Naam, is the giver of the real peace and happiness, because there is no happiness, there is no peace outside until our soul goes back to her real home. She does not get any peace and happiness. The real peace and happiness lies in the meditation of Naam. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। We cannot get this devotion of Lord, this Naam, with our own efforts only. Until we go to a perfect master, we cannot get the devotion. We cannot get to do the devotion of Naam. The beloveds of God are superior than God Almighty Himself, because they are the only means, they are the only link who can make us meet God Almighty. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Guru Nanak Sahib had said that Naam is a priceless wealth, and it is with the saints. God has sent the saints in this world, making them the storekeepers of the store or the wealth of the Naam. We cannot get it from anywhere. We cannot get it by any means. We cannot get it by using our power or our might. We can get it only after loving the saints. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Masters do not come in this world for any one particular family or one particular community. They come for the whole of the world. They understand everyone as their family. In fact, the Sangat is the family of the Master, because from within the Sangat, someone has to become the successor of the Master, and he has to do the work of the Naam. He has to guide the Sangat after them. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। So we should do the devotion of Lord sitting at the feet of the Master, and we should do the devotion of Almighty Lord and make our human birth successful. ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। Okay, all of you, please close your eyes and start meditating.
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਨਾਮ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। I am very thankful to my Gurudev, Supreme Father Kripal, and I am indebted to him that showering his limitless grace upon me and upon all of us, he is connected with the Naam. ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਦ ਦੀ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨਿਰਮਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਸਥੂਲ ਪਰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮ ਕਰ ਲਈ। Ever since our soul has come down into this world, come down from the pure, holy, spiritual words, the physical, astral and causal covers have covered our soul, and she has forgotten, she has lost her light completely. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਭੁਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੈੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। The essence of God has completely forgotten the path, the original path to go back to her real home, and she has been given this human body. Graciously, God Almighty has given her the human body, and in order to take the soul back, God Almighty also comes in the human form. ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। The world which is full of pains and happiness, this is the place where we are stuck, and we are stuck in this world only because we are accompanying our mind. ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, यहाँ आसा तहाँ वासा। अगर असी पूरे गुरु तो नामदान प्राप्त करके उन्हां ते प्रीत और प्रतीत करके अभ्यास करते हैं, अपने घर की फिर आशा रखते हैं, वो प्रभु सानू आपदे घर विच जगह दिंदा है, असी भी पहुँच जाते हैं। Usually we say that we get the things we wish for, and it is also said that you go to the place where you are attached. When we come to the masters and when we get the initiation from them, and when we wish to return to our home, then that wish is also granted with the grace, with the help of the master, and because of our wish to return to our home, we also get back to our home. हाँ भाई, बड़ा अमोलक समा है, इस तो फायदा उठाते हैं सभी प्रेमी। पंज पवित्र नामां नूं याद करके आपो अपने अंदर अभ्यास शुरू करो। So it is a very precious time. Taking advantage of this precious time, all of you should remember the 5 sacred names in your within, and closing your eyes and repeating these holy words, you should start doing your meditation. हाँ। Okay. Please all of you close your eyes and meditate. धुन प्यारी साधो अनहद की धुन प्यारी रे, अनहद की धुन प्यारी साधो अनहद की धुन प्यारी रे, आसन पद्म लगा कर कर से मूंद कान की बारी रे, आसन पद्म लगा कर कर से मूंद कान की बारी रे, जीनी धुन में सुरत लगाओ होत
नाद जनकारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। पहले पहले रल मिल वाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। पहले पहले रल मिल वाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। घंटा शंख बांसुरी वीणा, ताल मृदंग नगारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। हाँ भाई, बड़ा अमोलक समा है। परमात्मा ने अपनी अपार कृपा करके सानू इंसान दे जामे विच लियांदा, एक मौका दिता है
ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਲਸ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। It is a very precious time, showering His limitless grace upon our soul. God Almighty has brought us into this human body, into this human life. This is an opportunity which He has given to realize Him, but unfortunately we waste this opportunity because of our laziness, carelessness, and because we indulge in the worldly pleasures. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨੌ ਵਿੜਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨया ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਨया ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। The Mahatmas whose soul has been awakened and who have realized God Almighty within themselves, they know that what is the value of this ambrosial hour, how important it is for us to take advantage of this ambrosial hour. Even Guru Nanak Sahib says that rise up in the morning, think about the Naam and meditate on it. It is because in the ambrosial hour, since we have just woken up, we have forgotten the thoughts of the previous day, and since we are about to start a new day, that is why it is very important for us to take advantage of this ambrosial hour, and all the Mahatmas have said the same thing. ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। Sufi Saint Farid Sahib says that he who does not get up in the later part of the night, which means the early morning time, understand him that he is a dead one, he is not living. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੋਂਕੇ ਲੈਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। He said that if we are sleeping, if we do not remember God, and if we are sleeping, God Almighty also forgets us, because He sees that how we are involved, or how we are involved in the remembrance of the other things, and how we have forgotten Him. So, बड़ा अच्छा अमृत वेले का टाइम है, अखां बंद करके अपना अभ्यास शुरू करो। So it is a very good ambrosial hour. Please start your meditation closing your eyes. प्रीतम प्यारा मैं भूल गई नाम तुम्हारा, मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु तू मेरा पिता प्यारा। मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु तू मेरा पिता प्यारा। कैसे तुमसे बिछड़ गई मुझे बीत गया जुग सारा, शहनशाह बीत गया जुग सारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा मैं भूल गई नाम तुम्हारा। भजन करन को आई थी मैं करके कौल करारा,
भजन करन को आई थी मैं करके कौल करारा, जन्म मरण में कैसे फंस गई मेटो भरम हमारा, शहंशाह मेटो भरम हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। तीन के ऊपर देश अलख अगनामी अगम अपारा, सात लोक ऊपर देश अलख अगनामी अगम अपारा। कहे मस्ताना जी ले लो दवाई अब आ गया वैद हमारा, शहंशाह आ गया वैद हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। अनाउंसमेंट करनी है जी। There are still many people who have not had the opportunity to see Santji in the interview time. To be sure that everyone has a chance to be with him in his house, we are reserving the afternoon sessions for those with questions. Morning time will be there for individuals, families, and groups who have no questions to ask of Santji. So people are please requested not to bring any questions in the morning session. संगा कर ले वे मौका है सच रंगा चाद ले वे आवी तू सत संगा कर ले वे मौका है सच रंगा चाद रब सबब बनाया वे ए सोना समाती आया वे हुन रब सबब बनाया वे ए सोना समाती आया वे फिर वेला बिता दा जांदा तेरे दर्शन जिंदा तो तेरे मेरा का जीवन जांदा Shakriada Alma Mekela Chora Kalava Benurata Dineta Panda Tera Sharina Jinda Doteri Bemera Lakada Jivan Janda Yar Shakriada Alma Santa da nama ucha ho gaya ve jap da jo sacha ho gaya ve Santa
साडी देखी प्रीति वे कृपाल ने रखिया रीति वे अजायब देखी प्रीति वे कृपाल ने रखिया रीति वे अठंडे खलीजे पंडा तेरे दर्शन जिगर तो तेरे मेरा लाखान जीवन जांगा नक्शा पियादा पालवा मेरे विचोरा ताल लगने रात जिने तर पांदा तेरे दर्शन बिना जिंदा तो तेरे मेरा लाखान जीवन जांगा दर्शन पियादा पालवा। हाँ भाई, बड़ा अमोलक समा है। परम पिता कृपाल ने बड़ी दया की, सानू आपदे घर दा भेज दिता, आपदी आवाज़ नाल सानू जोड़िया। उस आवाज़ दा, उस अभ्यास दा असी रोज़ रोज़ सिमरन करांगे। इहदे विच मुहारत पैदा हो जाती है। शुरू शुरू दे विच हर काम दे विच सानू दिक्कत लगती है, औखा लगता है, खुश्क हुंदा है, लेकिन जद असी इहदे विच मुहारत हासिल कर लैंदे हैं, अंदरों रस आउणा शुरू हो जाता है। उस आवाज़ दे विच, उस शब्द दे विच, उस गुरबाणी दे अंदर रस टपकदा है। जद असी फैले हुए ख्याल नूं सिमरन दे जरिए अखां दे पिछे एकागर कर लैंदे हैं, उत्थे आत्मा नूं अमृत चखण नूं मिलदा है, जिहदा कि रस, जिहदा कि स्वाद दा आत्मा नूं ही पता है। It is a very precious time. Supreme Father Paul has showered so much grace upon us. He has given us the secret of his real home. He has made us hear the Shabad, the sound current. In the beginning, anything which you may try to do is difficult. The mind becomes dry. It becomes difficult to sit in the meditation. But if you go on doing it every day, if you go on listening to the sound current every day, if you go on doing the Simran every day, then we become competent in that, because whatever work you do on a regular basis, you become perfect in that. So when we collect our attention at the eye center, when we start remaining there, then we start enjoying the nectar which is dripping down from the Naam. And we can taste that nectar of Naam only when we come at the eye center. That nectar which our soul experiences or which our soul tastes, only the soul can describe its quality. It is something worth experiencing. भगत तना कहता है कि ना असी धन दौलत नाल नामना कमा सकते हैं, उच्चे हो सकते हैं, ना असी हुकूमत ना किसी होर मान वडियाई नाल अगर उच्चे हो सकते हैं, वो एक शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। Bhagat Na says that we cannot become the exalted one, we cannot become the highest one by any worldly name and fame. We cannot be the highest one by any rule or any power. We cannot get the high position by doing anything of this world. If there is any way to become the highest of all, that is the meditation of the Naam. आप प्यार ना कहते हैं गोबिंद गोबिंद संग नाम देव मन लीना आड़ दाम कोशी परो होयो लाखीना. Lovingly he says that by repeating the name Gobind, Gobind, by repeating the name of Lord, my mind imbued in the love of God, and I was worth nothing, but because I was doing the meditation of Lord, I became precious. बनना तन्ना त्याग के प्रीत चरण कबीरा नीच कुला जो लाहरा होयो गुनी हीरा. Kabir Sahib, who was born in a poor family, a low-caste family, and who was working as a weaver, because of his devotion to God, he gave up his job as a weaver, and he became a very serious devotee of Lord. सैन आई बुदकारिया ओ कर कर सुनिया हृदय वस्या पार ब्रह्म भक्ता में गिनिया. San the barber was the one who was rejected and who was not looked upon as a good person by everyone in every home. They used to talk against him, but because of the devotion of Lord, he became worth worshipping, and he became the beloved of all. इतिहास दसदा है कि जद ये भगत मालिक दे प्यारे नामदेव जी कबीर साहब जी
ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਲੋਧੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਹੱਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ, ਖੰਜਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਅਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। History tells us that when Bhagat Namdev was doing his devotion, he was bothered a lot by the Mughal emperors of that time, because the people who claim to be the all owner of the religions and those who claim to be the responsible people of the religions, they had misguided the emperors of that time, and as the result, the emperors, the Mughal emperor Sikandar Lodi, had bothered Bhagat Namdev. You know that the place where Sikandar Lodi used to live, the forts where he used to live, the palaces, nobody takes care of those palaces now, and there is no one there to remember his name. But because Bhagat Namdev did the devotion of Lord, that is why he has so many disciples, and millions of people, when they get up in the morning, they lovingly remember the name of Bhagat Namdev, and they do the devotion of Lord, and they feel honored doing that, because he was the beloved of God, who made a contact with God Almighty, who did the devotion of Lord. That is why lovingly now people remember him, whereas nobody remembers and no one takes care of the places where Sikandar Lodi used to live. Those places have become ruins. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਪਛਾਨਾ। Guru Nanak Sahib says that the low one, who is not known by anyone, if he does the meditation of Naam, he becomes known in all the four directions. ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So the Naam, which has so many good qualities in it, and by meditating on such a Naam, we gain so much. Why not do the meditation of such a Naam, which gives us the eternal peace and happiness, and catching hold of the Naam, catching hold of that Naam, we can go back to our real home. Why not we do the meditation of that Naam? We should specially take advantage of this precious hour, this precious embroidered hour, and we should devote ourselves to the meditation of Naam. ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ, ਬੱਚਾ, ਔਰਤ, ਮਰਦ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। It is very pleasing thing that anyone can do the devotion of Naam. It doesn't matter if one is old or one is young or one is man or woman. It doesn't matter that to which country or to which state we belong. People belonging to all different countries and states and all different religions can do the devotion of Lord, and they can meet with him. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। So taking advantage of this precious time, we all should sit in our meditation, closing our eyes.
ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते। हम निर्गुण तू दाता उजल कर दे, उजल कर दे। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, हम मूरख तुम चतुर सियाणे, हम मूरख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता उजल कर दे, उजल कर दे। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ਮਾਧੋ, ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ ਮਾਧੋ, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा उजल कर दे, उजल कर दे। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकर दे सा उजल कर दे, उजल कर दे। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਮ ਸਭ ਸਾਜੇ ਸਾਜਨ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੁਮ ਦਾਨ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ, ਉਜਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਮ ਭਲਾ ਕਰੋ ਹਮ ਭਲੋ ਨਹੀਂ
न जाने, भला करो हम भलो न जाने। तुम भला करो हम भलो न जाने, भला करूं हम भलो न जाने। तू सदा सदा दयाला, उजल कर दे, उजल कर दे। असी मेले सतगुरु जी, उजल कर दे, उजल कर दे। असी मेले सतगुरु जी, उजल कर दे, उजल कर दे। तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम सुखदाई पुरख विदाते। तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम सुखदाई पुरख विदाते। तुम राखो अपने वाला, उजल कर दे, उजल कर दे। असी मेले सतगुरु जी, उजल कर दे, उजल कर दे। असी मेले सतगुरु जी, उजल कर दे, उजल कर दे। तुम निदान अटल सुल्तान, तुम निदान अटल सुल्तान। तुम निदान अटल सुल्तान, तुम निदान अटल सुल्तान। जिया जंत सब जाचे, उजल कर दे, उजल कर दे। असी मेले सतगुरु जी, उजल कर दे, उजल कर दे। असी मेले सतगुरु जी, उजल कर दे, उजल कर दे। कहो नानक हम एहो हवाला, कहो नानक हम एहो हवाला। कहो नानक हम एहो हवाला, कहो नानक हम एहो हवाला। रख संतन के पाछे, उजल कर दे, उजल कर दे। असी मेले सतगुरु जी, उजल कर दे, उजल कर दे। असी मेले सतगुरु जी, उजल कर दे, उजल कर दे।
हाँ भाई, अमृत वेला है, रोज़ की तरह सानू हर पासों ख्याल नूं हटा के सिमरन दे विच जुड़ना चाहिए। It is an embroidered hour, like every day withdrawing from all sides, withdrawing our thoughts from all the sides, we should connect ourselves with the Simran. महाराज सावन सिंह सब संत यही कहते गए कि मन दियां चलाकियां तो बचो, जो मन दे कहे लग गया, मन माया दी दलदल दे विच जीव नूं फसाउंदा है, जीव तड़फदा है, रोंदा है, चिल्लांदा है। अनेका पत्रां तो पता लगता है प्रेमियां दे, या इंटरव्यू मिलण दे विच पता लगता है। वो कहंदे आ साडे दुखां दा कोई मेच बन्ना नहीं, असी दुखां दा अंत करना चाहुंदे हैं। उन्हां नूं प्यार नाल दस्सिया जांदा है कि देखो प्यारिओ, इस दा इलाज तुसी अंदर जाके ही कर सकते हो। आत्मघात बारे भुल के भी ना सोचो। आत्मघाती महापापी इन्हां दुखां नालों किते ज़्यादा अगले दुख होणगे जो जाके भुगतने पैणगे। महाराज सावण कहंदे हुंदे सी कि आत्मघात बारे अगर तुहानूं गुरु नाल प्यार है तो सोचो भी ना, आत्मघाती नूं गुरु भी नहीं बख्शदागा। तो इहदा इलाज साडे शरीर दे अंदर है। क्यों ना नाम नाल जुड़ के असी ये दुखां भरी दुनिया तो छुटकारा पा लईए, वापस अपनी आत्मा नूं अपने घर ले चलीए। Master Sanbornton Singh and all the great masters have always said that we should beware of the tricks of the mind. We should protect ourselves from the tricks of the mind, because the mind involves us. He throws us into the swamp of the Maya, and he throws us into many difficulties and many sufferings. From the interviews of the dear ones and from the letters which they write to me, I come to know that how much people are unhappy, how much they are suffering because of the tricks of their mind. And they tell me that their sufferings do not have any limit. They have limitless sufferings, and they want to end that suffering. I always advise them, the dear ones, the only way to end your suffering is by going within and by doing the devotion, by connecting yourself with the Naam. Because Naam is the only thing which can put an end to your suffering. There is no other thing. If you will go on following your mind, he will keep playing tricks on you, and he will keep involving you in the bad things. He will bring the thoughts of disappointment, and he will even make you suicidal. You should never even think of committing the suicide, because masters always tell us that it is a very bad sin, and one does not get forgiveness for committing this bad sin. And some people think that by committing the suicide they will put an end to their suffering, but it is not possible. It is not possible to put an end to the suffering by committing suicide, because when we will take another birth, we may have even more difficulties and more sufferings. So that is why Master Sanbornton Singh always used to say that you should not even think of committing suicide, because even the Master does not forgive the one who has committed the suicide. So that is why he also used to say that within your body is the remedy for all your sufferings and all your pains. So why not connect yourself with that Naam, which can put an end to your suffering. The Naam is within you. So we should also follow the teachings of the Master, do the meditation of Naam, so that we can return our soul to her real home. कुदरत दा पक्का कानून है, आस नूं मुराद मिलदी है। अगर असी दुनिया या दुनिया दे पदार्थां नाल मोह पाउने आ, सानूं इसे दुखां भरी नगरी विच आउणा पएगा। अगर असी महात्मा तो नाम की जुगती लैके अपने अंदर चले जाइए, साढ़े सब परेशानियां, सब दुखों का समाप्त हो जाता है, और साड़ी आत्मा उस समुद्र विच जाके मिल जाती है जिसकी एक बूंद होती है। It is a law of the nature that we get the boons, we get the things according to our wishes. If we are attached to the things of this world, if we wish for the worldly things, we come back to this world again and again, and we get the sufferings and the pains of this world. But if we have the love for the Master, if we desire for doing the devotion of the Naam, then our soul can easily go back to her origin. Our soul is the drop, and we can easily take our soul back to the ocean from where she had come. साढ़े परम पिता
महाराज कृपाल ने अपार दया करके सानू अंदर जाण दा साधन तरीका दसिया। ये भी नहीं कहा कि तुसी कल्ले जाओ, बल्कि भरोसे ना विश्वास ना किया कि तुसी ख्याल नू फैले नू सिमरन दे जरिए अखां दे पिछे आओ, मैं हर मंजिल ते तुहाडे नाल होऊंगा। सो सानू चाहिदा अपने गुरुदेव दा प्यार नाल हुक्म मनदे होए भजन सिमरन दे विच जुड़ गए। Showering his limitless grace upon us, Supreme Father Kripal told us that we have to go within. He asked us to go within. He did not say that you have to go within yourself. He said that you follow the teachings of the path and obey the instructions of the Master. Come to the eye center, and I will be there to guide you on every single plane. I will also go along with you in the inner planes. So obeying the teachings, obeying the orders of our beloved Master, and withdrawing our attention from all the outer things, we should also connect ourselves with the Naam inside, and we should also do our bhajan and simran. अखां बंद करके अपना अभ्यास शुरू करो। All of you, please start your meditation closing your eyes. सार है जिंदगी लाचार है, आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। झूठा संसार है, जिंदगी लाचार है, आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। मेरे दाता जी गुनाहगार असी, साडे कागज न फोलवे, कागज न फोलवे। मेरे गुनाहगार असी, साडे कागज न खोलवे, कागज न खोलवे। बेड़ी मंझदार है, कर देओ पार है, आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। झूठा संसार है, जिंदगी लाचार है, आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। आओ प्यारे सुन लो बेनती, सुन लो बेनती। आओ प्यारे सुन लो बेनती, सुन लो बेनती। सच्चा तेरा प्यार है, तेरा ही आधार है, आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। झूठा संसार है, जिंदगी लाचार है, आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। असी हाँ मैले सानू उजल कर दे, उजल कर दे। असी हाँ मैले सानू उजल कर दे, उजल कर दे।
करना दीदार है, रूह शर्मसार है। आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। झूठा संसार है, तुसी बख्शो दाता जी, तुसी बख्शिंद हो, तुसी बख्शिंद हो। तुसी बख्शो दाता जी, तुसी बख्शिंद हो, तुसी बख्शिंद हो। अजायब दी पुकार है, खड़क रही तार है। आओ कृपाल जी तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। झूठा संसार है, जिंदगी लाचार है। आओ के